1/4। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो अकाउंट्स है वो सीरियसली में ज़्यादा खुलते हैं, और इंक्रीमेंटल जो अकाउंट ओपनिंग है और इंक्रीमेंट की 80% इज कमिंग टू सीरियसली, तो जिसकी वजह से सीरियसली एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर हो जाता है। हालांकि एनएसडीएल को आप देखेंगे तो अगर इश्यूअर्स के टर्म में, तो वहाँ पर पे लीडरशिप पोजिशन एनएसडीएल की रहती है, जहाँ पर पे एनुअल कस्टडी चार्जेस आते हैं। बट वही अगर हम डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स की बात करें, तो एनएसडीएल जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म आ जाती है या ब्रोकर्स आ जाते हैं, वो कंपैरेटिवली वहाँ पर पे लेसर वॉल्यूम है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू के टर्म में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 56-57 रुपीज़ पर अकाउंट जो है वो ये कंपनी बनाती है, जो कि टिपिकली सीरियसएल से ज़्यादा है। तो ऑल इन ऑल मेरा मानना है कि एनएसडीएल भी एक अच्छा प्ले हो सकता है, बट थोड़ा सा जिस वैल्यूएशन पर अभी भी कंपनी आएगी, तो ऑलरेडी एक मेरे हिसाब से प्राइस डील लगती है। बट डेफिनेटली ऑन टिप्स ये स्टॉक में मुझे लगता है डेफिनेटली लॉन्गर टर्म स्टोरी के साथ है, इसको इक्विटीज को देखना चाहिए। परफेक्ट है, और भी डिटेल में बातचीत करेंगे अपन। आज जब 10 के दमदार ट्रेड्स में पार्थिव शाह को भी बोला है, आई की डिटेल स्टडी करके आए, अभी बताया करना क्या है, करना है या तो पार्थिव से अपन 10:15 के आसपास इसी आई के में चर्चा करें। खैर भाई साहब, चार्ट स्टडी करें आपने, किसी में दमखम, किसी में कोई ट्रेड का विकल्प। आईडीबीआई इसलिए मेंशन कर रहा था क्योंकि वो ओएफएस लेकर आ रहा है, वो माल छोड़ रहा है, और सीडीएसएल भी क्लियर है। आशीष चार्ट की बात करूँ तो आईडीबीआई में तो अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। ज़रूर थोड़ा सा करेक्शन है, 3-4 फ्लोर का पूरे के पूरे पीएसयू बैंक्स में थोड़ा करेक्शन देखने मिला, और हमें लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी बनी है वापस। तो 90 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है 99 के टारगेट के लिए। अगर वहीं मैं सीडीएसएल की बात करूँ तो देखिए नंबर्स के बाद एक काफ़ी मेजर रिएक्शन देखने मिला था सीडीएसएल में, 6-6.5% की गिरावट थी, और कल एक थोड़ा सा पुल बैक पहला साइन देखने मिला है। खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें, लेकिन 1555 1555 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग चेज करें, उसके नीचे इसमें खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। 1555 के अगर ऊपर बाय कर रहे हैं तो 1540 का स्टॉक। गुड मॉर्निंग। Let us mark out yesterday's high and low. Usually they play a pivotal role in the resistance and support. Yesterday's high, yes, there we go. We have marked the yesterday's high and low. Currently the strategy is in the long, sorry, let us see, the strategy is in a 9 minutes. So the strategy was, kind of, yesterday it has taken a long position at around 24,785. Currently, even though it is sitting on a profit of 22,250, what the challenge we have is that the Gift Nifty is showing a negative of almost 45 points. So we'll wait to see how it really will work out. Meanwhile, let me log into Sensible and we will see where the options data stands.
Here is the option data for expiry, for tomorrow's expiry. So we have a decent amount of put writing at 24,800. So that is good because as we stand now, we are at 24,821. So 24,800 can be a good support, and the first resistance will come up at 24,900. That is where there is a lot of call rating is there. So market may, if it surpasses, then it will go all the way to 25,000. So I won't be surprised given the market status that it can reach even 25,000. Let's see how much is the FI data. Again, yesterday the FI sold for 3,500 crores, almost now 35,000 crores worth of cash selling that has been done during this month. So that is what actually keeping the very, very big lid on the Indian share market. So, but very good amount of call rating, 700 also. So the market, even if it falls below 24,800, there is a highly good likely chance of that it is recovering during the day itself. Let's see how it comes to. Those who are want to get this particular strategy, in fact we run both gold as well as Nifty strategy simultaneously. If you want to get automated, please contact 90032905009. The number will be available. And you can also so there is a good possibility that Nifty can continue to its upward movement today, because tomorrow is the expiry, and good amount of put rating is there at 24,800. So 24,800 can be the base, and I won't be surprised if Nifty touches 25,000 by tomorrow afternoon. So that is a good possibility. Also, if you see yesterday, good amount of heavyweights have performed well. Both HDFC and Reliance are back to making inroads into the increase in prices. L&T also did very, very well. Kotak, Bharat, Hindustan Lever, Bajaj Finance to some extent, but Asian Paints and Hindustan Copper, etc. Now, Tata Motors, Maruti had a very, very good day yesterday. So if there is no profit booking today, then we can likely to see continuance of this, and the expiry may happen around 25,000 for tomorrow. That is my view. We will see how it behaves today. If good amount FI sellings do come in, then we may have some challenges. But otherwise, it should be a good positive expiry as far as my view is there. See yesterday's chart, if you see how well it respected the pivot lines. So those who are playing options,
they should see how, where, I mean, in the chart, the Nifty is and what will be the support. So it came down to exactly at 24,614, and then it took support from there, and then went all the way up. And the first resistance was came at the pivot 24,738 range, and then it went all the way to support 3, and then from there it went up. So actually the strategy will also give you a good view where the market is moving. So just to give you some view or idea on the chart that we use. So our strategy has a very powerful, you can see an yellow line, and whenever you see the price is below that, the Nifty starts to go down, and then once it crosses above and sustains above, then the up move starts. So those who are handling, those who are doing day trading, etc., can also benefit from that. Also, if you see our pivots, so as soon as the price was falling yesterday and this came to around 24,612, you can safely take, because S3 is a very big support always, and the market will do go up. So you could have taken some calls there. The market has opened, walked onto a huge surplus of almost 400 points. I'm not sure these will sustain, so we may have to wait. But usually the first few trades indicate where the market is going to be in the from the pre-market. So if it is starting off green, we can safely say at least the pre-market will end in green, and then from there we will take it on. Good. So let me give you a kind of a brief on what the chart and what are all there in the particular chart. So you see a yellow line there. So this yellow line plays a very pivot where the market is going to be at least for next few couple of hours. So those who are playing intraday, what they should be careful of is that if they are in call, for example here,
you can say that okay, since the prices moved down below the yellow line, you should be technically after a couple of hours you should be getting out of calls. But if you are in put, as long as the price is below this particular yellow line, you can keep the put, and as and when it changes, when the price goes above yellow line, then you can close your thing. So this particular strategy will also help you on day traders, because it is running on a 9 minutes chart. So the response will be very quick, and it has some not lagging indicators but forward looking indicators. The other aspect one should watch out is the trend meter below. This is a common trend meter, but slightly adjusted to our research and kind of development. So if you see, as long as all the threes are turning into red, the market fell, and as each has a different indicator on the back side. So if all three greens have started to come, then you can safely keep it. The market will keep going up. And the first signs of red, if you see that then one of the lines have started to get red, then you can start trailing from that place, whatever is the stop loss. So those who are playing the day intraday calls and put options also can use this chart and see how to take it out, take it forward. So Nifty likely to start on in the green only, it looks like, because it has not come down below 50 points when it started in the pre-market. So we will see where it's end up at 908. If any short covering starts up, then the short covering will be very bit ferocious, because we have been the market has been falling or sideways for quite some time. So another aspect also you can keep in mind is that as and when the situation or where from buy to sell or sell to buy takes place in this particular strategy, you will have a orange thing for that particular bar. It will keep flashing and telling you that it is switched from long to short or short to long. And the strategy also has a confirmation bar concepts, meaning that both at entry as well as at exit, it will wait for a couple of bars of confirmation whether the same situation exists, same price action exists, then only it will kind of close the position or take fresh position. Please subscribe, like and share, and if you want to get this automated, contact 9003. Let me put the telephone number to automate call. Good. So you can call us at 9003290509, and then we will automate it in your account, and so you will have the complete control of the account. And what we will do is only buy and sell,
directly from the system. The alerts will get triggered from TradingView via API platform. It will go, but only thing is that you need to open a demat account in Fires. So that is where our connectivity is currently established. So, and it's also Fires is also one of the very low cost demat, and they do give a good amount of leverage also. So please call us. Market is starting up with a 69 points plus, and most of the heavyweights except Kotak, Hindustan Unilever, State Bank of India, Maruti and Tata Motors, M&M, except for these stocks, most of rest of the stocks are in green. L&T is starting up with almost 0.5% up, and the other notable thing is HDFC Bank is starting with a 6 rupees plus. So HDFC, ICICI Bank, Axis Bank, all the three heavyweights in banking sector are starting with the positive notes. So we might see a bank rally, bank Nifty rally. We will see. Open interest. 29th July. Hmm. 24,800 has a good amount of call and put writing, but yesterday in the last hour the call writing seems to have reduced, meaning that I think the market is expected to stay above 24,800. करीबन 152 पे क्लोज हुआ, मेरा स्टॉप लॉस होगा 145 जो टारगेट में ट्रैक कर रहा हूँ करीबन 165 के आसपास, 165 170. ओके, आरसीएफ आपका 154 पिक बाय कौन है? प्रशांत जी का आरसीएफ होगा। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए मेरी मेरी नज़र है अजंता फार्मा पे। अजंता फार्मा का एक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो रहा है 2038 के आसपास एक्टिविटी ओपन है, तो बाय करेंगे अजंता फार्मा स्टॉप लॉस होगा 10 और इसका टीम का टारगेट होगा 180 से लेकर 2000। ये एपीएल में क्या कह रहे थे आप? ठीक है नहीं आशीष जी, कल मैंने इंटीग्रल दिया था, मैं कोई चेक कर रहा था, मैंने भी चेक नहीं किया था,
मेरी नजर इमोशंस पे अटक गई। इसमें आपकी गलती है। ये बादाम का आइडिया देने के बाद पैसे नहीं भेज रहे हैं अपन लोग, तो अच्छा जब कॉल की चर्चा हो ही रही है तो टॉप कॉल एक ले लेता हूँ, उसके बाद गुरु के पास आता हूँ। सचिन, आज आपका टॉप कॉल कौन सा था भाई साहब? आशीष जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑक्टोज पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर टाटा मोटर्स में काफी हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ है। पूरी सीरीज में इसने एक बेस को मेंटेन किया है 680 के आसपास, एंड बेस पे अभी भी काफी कॉन्फिडेंट गुड राइटिंग एक्शन नजर आई। जिस तरीके से कल की प्राइस एक्शन में काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑगस्ट के फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 695 के आसपास ट्रेंड है। 690 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 685 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिहाज से एक्सपेक्टेड होगा 710 का, पोजिशनल टारगेट होगा 730 का। खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स के ऑगस्ट के फ्यूचर से। ओके चलिए, अब निफ्टी बैंक जहाँ सेटल हुआ है, कल के अच्छे मूव्स के ऊपर फर्दर लेग्स है मूव के 1.25 फीसदी मजबूत तो अपन ने कल बढ़िया बेस से बाइंग इनिशिएट करी थी, पहले रेजिस्टेंस के पैच पे हिट हुए थे। वीरू मेरे ख्याल से आज का जो फ्रेश रेजिस्टेंस का पैच है उस पे फिर हिट करने जा रहे हैं। भाई साहब क्या नजर रखते हैं कौन से लेवल पे? आशीष, मैं फोकस करूंगा बैंक क्योंकि यहाँ पे एलएनटी जो है ना, एलएनटी का कंट्रीब्यूशन एक सब्सटेंशियल गैप अप क्रिएट कर रहा है। दिक्कत गैप अप से दिक्कत है गैप अप के बाद सामने खड़े हुए 50 डे एक्सपोनेंशियल जो कि आता है 24,930 के आसपास। तो मैं 10-15 मिनट बाद भी पहुंचूंगा निफ्टी पे कि क्या करना चाहिए। उधर सेल 931 नहीं क्रॉस हो रहा है तो क्या सेल करें, बट 931 अगर पार होगा तब आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। दैट इज 25,000, 25,081, 25,111 किसी एवरेज के पार होने के बाद नेक्स्ट बट मैं आशीष पोस्ट देखना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी अगर 56,300 हो रहा है तो बेटर रिवॉर्ड है बैंक, क्योंकि वहाँ पे उतना कल शार्प नहीं गया था और 20 डे में बैंक निफ्टी का खड़ा है 56,688 के आसपास, तो 350-400 पॉइंट वहाँ पे। तो मेरा बैंक को फोकस रहेगा। बैंक निफ्टी जो है ना मुझे थोड़ा सा दिख रहा है 24,930, 31 ये तो लेट्स सी ओवर होने के बाद, बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी लुक्स गुड। बढ़िया लग रहा है अगर परफॉर्मेंस बड़ा रीजन अब तक तो लास्ट मिनट टू ग्रो नंबर बाकी है। क्या वीडियो आप कंटिन्यू करिए, मेरा तो खोल रहा हूँ सही टाइम पे हो जाएगा मात्र और 30 सेकंड और अभी चलते हैं रिंग में करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 24,890 करीब 70 अंकों पर हो गया। ये देखा ना 30 सेकंड वैसे सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, बॉल आपने तैयार ओवर टीम चलिए भाई वेडनेसडे का एक ऑल इम्पोर्टेंट सेशन है। आज शाम को बाजार बंद होने के बाद इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, कई सारे यूएस के आंकड़े, बड़े बड़े नतीजे और फेड का फैसला आ रहा होगा और कल हम लोग मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उस लिहाज से ये पेनल्टीमेट सेशन बहुत इम्पोर्टेंट। कितना कल के इंटरडे रिकवरी को फर्दर भुना पाते हैं वो देखना होगा। इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जोन खड़े हुए 900 और 25,000 के, जहाँ पे तगड़े राइटर्स भी खड़े हुए और साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। खैर शुरुआत बढ़िया 127 के साथ हुई निफ्टी का नहीं मामला। अब हम 30 पॉइंट इन 840-850 के आसपास ट्रिपल कामकाज करते हुए एक चौथाई का हम फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिक्कत की बात निफ्टी के दोनों पिलर्स जो निफ्टी बैंक फ्लैट है, निफ्टी आईटी फ्लैट कामकाज करता हुआ और निफ्टी भी धीरे धीरे उसकी साहब 830 ये तो कल की क्लोज पे पहुंच गया। बिल्कुल
फ्लैट हो ఇది చెప్పినామంటే సేమ్ ఎంటైర్ థాట్ ప్రాసెస్ our depends on that process मिड कैप फ्लैट है anything I'm planning right now I'm planning on a उसी solo तरफ ले जा रहे next हैं time स्मॉल what कैप happen, money फ्लैटिश lessons है for स्लाइटली What that के they said, बस एक ग्रीन का they नाम आ want to चुका है take your own अदरवाइज ग्रीन time. करके You क्लोजिंग will कोई think एम्ब्रेस करके you first you know what is नजर आएगी so इनिशियल ब्रेथ तो ठीक है पर ये बहुत इनिशियल थोड़ी ज़्यादा तस्वीर बदलेगी इसमें अभी అదైనా కూడా నాకు 3:1 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में ये अच्छी बात నా కాన్ఫిడెన్స్ बैंक और आईटी पे नजर रखिए दोनों थोड़े से फर्स्ट पड़ते हो और आज को निफ्टी 50 भी है इजीली वन शायद इन रेड निफ्टी जैसी आपको कामकाज करता हुआ एनी पर्सन आई नो एक काम करेंगे निफ्टी को छोड़े जाना एकदम फ्लैट महज 5 से 10 पॉइंट के उछाल के साथ अपन चले जरा सेक्टोरल हीट में वहाँ से देखते हैं इनके अलावा बैंक फ्लैट है बैंक के रिफ्लेक्शन फ्लैट है सरकारी बैंक फ्लैट डिफेंस हैज अ स्पेस कल पीएम मोदी की पार्लियामेंट हुआ तो इस शो में आगे उस स्पीक का वो अंश भी सुनाएंगे आपको जिसमें डिफेंस अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट की बात आधा परसेंट मजबूत है ये हम बैकग्राउंड के मैनेजमेंट से भी आज बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट फ्लैट है एनएसडीएल के आईपीओ बैकड्रॉप में ज्यादा हरकत नहीं है मेटल्स अच्छा कर रहे हैं मेटल्स क्रूड ये सब क्योंकि ग्लोबल डिमांड के होप्स राइट कर रहे हैं आधा परसेंट ऊपर एफएमसीजी फ्लैट है आईटी फ्लैट है रेड सेट में ग्रीन पे आया ऑटो आधे परसेंट की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ मेरे ख्याल से इसमें टाटा मोटर्स अडॉप्ट करेगा बहुत एग्रेसिव एक्टिविटी खबरें आ रही फार्मास्यूटिकल्स 127% मोमेंटम सस्टेन करता हुआ भैया अच्छा कर रही है पॉकेट आज पे रियल्टी कल के अच्छे मूव के बाद फ्लैट है ऑयल एंड गैस फ्लैट है जबकि क्रूड इनके फेवर में कैपिटल को ज्यादा परसेंट वो डिफरेंस के रिफ्लेक्शन है आधा परसेंट उछाल के साथ एनर्जी स्टॉक 127 मतलब इसका मतलब एनटीपीसी बुरा नहीं कर खैर उसके बाद में आता हूँ एक बार प्लीज निफ्टी 50 को लेकर आइएगा उसके बाद अपन स्टॉक स्पेसिफिक हीट मैप की तरफ बढ़ेंगे दिखाएंगे ठीक है मामला ठीक ठाक ही है मैंने 850 860 के जहाँ छोड़ा था अपन ने 5-10 पॉइंट ऊपर और 30 पॉइंट ऊपर आ गया आईटी लाल से हरे में आया बैंक अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं ब्रेथ अब तक मेंटेन है 2:1 एडवांसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कल आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था कल की ब्रेथ पॉजिटिव कल की ब्रेथ थी हमारे बाजारों की 2:1 एडवांसेस के ये 8 सेशन बाद हुआ था कल ब्रेथ आज भी अब तक ब्रेथ बढ़िया है ये इम्पोर्टेंट हमारे मार्केट के लिए इंडेक्स मैनेज हो रहा हो जो हो रहा हो ये ब्रेथ पे नजर रखिएगा असली मूड का बैरोमीटर ही प्लीज लेकर आइए आप 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी छोड़ के आप लेकर आइए जरा हीट मैप लास्ट इन टू ब्रो बढ़िया थम्स अप कल के नंबर्स पे अच्छी तेजी के साथ जिनके हाई स्कोर हुआ था 3.5% मजबूती जेएसडब्ल्यू स्टील सुप्रीम कोर्ट का वेलकम रिलीज कल भी ठीक था आधा परसेंट ऊपर बंद हुआ था 1.5% ऊपर डिफेंस का बीएल अच्छा कर रही है जियो फाइनेंशियल कल निफ्टी का टॉप गेनर अहेड ऑफ बोर्ड मीट आज फिर साथ के साथ ट्रेड करता हुआ फार्मास्यूटिकल्स सन फार्मा मेंशन भी कर रहे थे फार्मा बना हुआ है खैर बाकी हैवी मेटल्स अच्छा कर रहे हैं स्टील वगैरह बाकी अदर्स मनी लो मत अभी भी आईटी को कर दिया था खुद पे नींद बारी एचसीएल तक वगैरह विप्रो सब पे सब गिर आ रहे हैं टीसीएस है एचसीएल तक विप्रो एक सारी पॉकेट अब इन परसों और कल दोनों दिन सब्ड्यूड था रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवीवेट फ्लैश आइए दबाव में टाटा मोटर्स की आकलन कहता है 1.5 बिलियन यूरो स्पेंड ऊपर से ओपन ऑफर लाना पड़ता है इसीलिए आप देखते हैं 3.5% एशियन पेंट्स 1.25% दबाव बेसिकली कंजम्पशन एज अ पॉकेट देखिए एशियन पेंट्स एचयूएल बजाज ऑटो आईटी मोटर्स हीरो मोटोकॉर्प सब दबाव के साथ ट्रेड कर रही हैं आईटी इतने सारे आईटी सब मजबूत है उसके लिए शायद इन्फोसिस रिस्पॉन्सिबल है ये क्लॉथ है हेवीवेट इस समय सबड्यूड सा ट्रेड करता है लेकिन कंजम्पशन ज्यादा पॉकेट है चाहे वो ऑटोज के लिए पड़ लो वो पॉकेट हीरो हो गई ओपनिंग मैप 40 पॉइंट ऊपर 860 मतलब अपना बिल्कुल रेजिस्टेंस बैंड पे आके मामला मतलब क्या लग रहा है ओपनिंग कैसी लग रही है आशीष जब तक बॉल पे थे करीब बॉल मुझे लगता है कि
ये एक्सरसाइज 3 कॉल उसके बाद निफ्टी देखिए ऑप्शन राइटर्स बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे हैं बाजार सिंपल इंट्रेस्ट याद रखिएगा 24,800 को छुआ लगभग फिर वहां से 50 जरा 24,900 की पुट अब 600 700 800 में से सबसे बड़ा आज अब तक की रैंकिंग यानी अब इंट्राडे सपोर्ट कल के स्टेप्स को निकालते हैं 24,800 ఇద్దరికి ఒక यानी शुरुआती स्टेप्स के मुताबिक हमारे पास चैनल है सुबह सुबह वो है करीब करीब नीचे की तरफ 24,790 820 और ऊपर की तरफ 24,900 931 जहाँ पे 31 पे क्या है आपका यानी 125 पॉइंट की चैनल है जिस पर फोकस करें चैनल अगर ब्रीच हुई तो ट्रेड करें एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है खुलते ही साथ दोनों तरफ ये टूटा बैंक निफ्टी ये 56,200 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाए मतलब ही नहीं है 300 के ऊपर नहीं टिका एक बार कंट्रीब्यूटर्स टिके ओके अगला फोन पर मतलब ही नहीं है देखिए यहाँ पर इस वक्त असिस्टेंट था बाकी एचडीएफसी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को बता दीजिए ये हो गया इंडेक्स देखिए इंडेक्स पे अब कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स हावी हो गए मैंने स्टैट्स आपको दिखा दी दैट्स टर्न टू स्टॉक अब आते हैं स्टॉक्स पे आशीष ने बखूबी अगर आप देखें आपको ओपनिंग समझा दी एलएनटी ने निफ्टी को थामा हुआ है अदर देन एलएनटी इट्स एचडीएफसी बैंक जो पुश प्रोवाइड कर रहा है बाकी देखते हैं सबसे बेस्ट चार्ट सुबह का लेके आता हूँ स्क्रीन पे लिख कर रख लीजिए भाव 719 सिंजन अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आफ्टर 28 जनवरी 2025 उसके बाद लेके आइए मिड कैप आईटी में कोफोज 1% ऊपर अबाउट 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑल इंडिया 1.25% ऊपर सारे एवरेज के ऊपर और बैंक ऑफ इंडिया को लेके आइए सारे एवरेज के ऊपर और क्या क्या अच्छा कर रहा है आपकी स्क्रीन पे एक लेके आइएगा लॉरस 918-17 इस जोन पे आके ट्रेड करता हुआ और एक स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे स्ट्रेंथ है और अच्छी स्ट्रेंथ है दैट्स पूना विद फिनकॉर्प 100 डे से एक ट्रेड लेता हुआ आशीष लॉरस उस दिन के हमारे हिचकिचाहट वाले लेवल से फिर 30 रुपये ऊपर हमारे हिचकिचाहट वाले ब्रोकरेजेस के वैल्यूएशन कंसर्न वाले सबको डिवाइन ग्रेविटी है ना See ट्रेड्स how exactly अच्छा ट्रेड्स पिक करते हैं बिल्कुल ठीक है और कुछ see how the price is respecting the pivot lines exactly at 24,088 around that it got rejected and then it came back all the way. Now it might once touch S1 or if it stays above this yellow line then it will continue to go up and then we can see. So as of now it has made a high of almost 24,893, 24,900 range. We see whether the price stays above the yellow line. As long as it stays above the yellow line, those who are having a call, they can continue to hold the calls. So if any one bar which is goes below that you can start putting your stop losses for your calls. Ideally speaking, if somebody wants to really bet for tomorrow expiry, so 24,000 24,900 call can be bought above 52. So
So 24,900 call for tomorrow, one can buy above 52. Also, if you want to play on the short side, let me check. The short side doesn't look so promising, to be honest. Even though it is currently quoting around 60 rupees today, 58 to 60 rupees, it will have huge resistance of 77 and 80. So it will be better to play the call side with good stop losses as of now. That is how the market is currently. Some much in IT and L&T, Maruti, Auto is holding up. Tata Motors, which was kind of going up last few days, in red today. And also, if you check our trend meter here, even though everything was green, now we started having red dots coming up. So if you are having calls, please trail it with stop loss, because it can kind of turn. Once this particular price goes below this yellow line, now you can see the prices beginning to fall. So have it as kind of a marker for you, and keep watching this strategy. And if it goes below this red line, yellow line, then close your calls or trail them with a stop loss. So you can see it is changing between red and green. So this trend meter will give you very clearly how the back end the price action is. So as long as they are green, calls will work, and if they are red, you should be better be on put side. So combining the trend meter as well as with this yellow line, you can play both calls and puts. So if you have any doubts, etc., please kind of type in the chat, so that I will be able to explain to my knowledge how to go about your trading. Once today's high is taken, only then you will have a good rise in the market, because your next resistance comes all the way